এখানে দেখাচ্ছে ইউ আর লাইভ, অলরাইট। So now we are live. So it's like, wait. Ah, okay. Namaskaram, guys. This is Aryan from Arthasas Theoretical. You can see it, right? Uh, I've been trading from last 20 years in different platform. I'm a professional trader, trading in stock market as well as commodity and currency. Mostly, we do trade in Vedic way. All right, Vedic way doesn't mean astrology. What we learn and what we do, we trade with astronomics, economics with astronomy. Now, how we are going to trade with astronomics? This is what we are going to learn over here in next 60 days, as well as we are going to see how to trade in, intraday. Okay. Generally, whenever we are talking about a Vedic way of investing or trading, we do not trade intraday mostly. All right, because intraday trading is a we believe and teach people that intraday trading is a very expensive hobby. All right, so we must not get into that. But do we need to trade intraday, or can we really trade intraday? Obviously, yes, we can trade intraday.
Okay, just give us 5 minutes. Okay, we think there is some certain technical glitch. Okay, let us sort it out. Shubho, yes. Okay, Pranama once again. Sorry, there was certain technical glitches, so that's why. Even to the morning when we tried to go live in just a minute, please. Okay. Huh. Okay. Hi. There's still some technical glitches, some problem. So that is why we're having these issues. Even today morning we tried to come online, live to show Indian stock market as well as the indexes, but unfortunately couldn't do that. I mean, we recorded. We had taken this 2 hour session, but at the end of the day, we saw that it didn't work. Okay, it wasn't uploaded in YouTube. I mean, couldn't be live. So no problem. Maybe something whenever you are trying to do something new, so it happens. Whatsoever. Let's talk about the currency, commodity, and you know, uh, yes, currency, commodity market, right? That's why we are taking this session in the evening at 7 o'clock when we can talk about silver, gold, copper, currency as well as BTC, okay, and Ethereum. All right. So yesterday we had discussed if we have gone through yesterday's session. If you haven't gone through, आप एक बार देख लीजिए कि हमने क्या बात किया था, क्या डिस्कस किया था about the crude oil, and see after that how crude oil is behaving today. Same is with silver, कि सिल्वर के बारे में हमने जो डिस्कस किया था. ऑलराइट, दिस इज सिल्वर. ओके, तो सिल्वर का कहाँ पे हम लोग सपोर्ट एंड टारगेट एंड रेजिस्टेंस के लिए बात किया. सो यू सी, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि वहां पे हाउ सिल्वर इज बिहेविंग. Okay, now one more important instrument that we had discussed yesterday is the Euro USD. Okay, now we are also going to check how the Euro USD has behaved today till now. Okay, Euro USD.
today we are going to talk about uh, today we are going to talk about today we are going to talk about crude oil. Okay, crude oil today. Yes, even if you're going to take position in intraday, you will be able to take. You will be able to close your trade in profit at the end of the day, even now at 7 o'clock. Okay, 7:10 p.m. All right, because if you go through yesterday's candle in crude oil, all right, that we had already discussed. See, crude oil में हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर if you know this red candle creates below 113, below 113, okay, and 31, this is 31, अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होता है, okay, then we can sell just below here, putting a stop loss on this 31 EMA 61.89. All right. यस, सो उसके बाद थोड़ा नीचे आया था बट नॉट मच, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, बट इट इज वेरी नेगेटिव। एंड अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करते हैं तो कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे $54, $55 और $56 तक। ऑलराइट, इसे लॉन्ग टर्म ट्रेड। ओके, सो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, ओके, तो आप मिनिमम 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए एंड उस हिसाब से काम कीजिए। बाय द वे, वी आर टीचिंग दिस इकोनॉमिक्स, commodity market, currency market, stock market, indexes in Vedic way. Okay, the basis of our calculation is time. All right, because we believe time is the only element that determines price. So if we understand the time and degree, we'll automatically able to understand the price. अगर हम लोग समय को समझ लेते हैं, टाइम को समझ लेते हैं एंड डिग्री को समझ लेते हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली हम लोग समझ जाएंगे। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कैलकुलेट आई मीन, सो we teach everything in Vedic way, and as a result, we don't take SEBI registration. We don't have any SEBI registration. If you are taking any position, as a disclaimer, you suggest your so-called technical analyst or your financial analyst. Okay, definitely they are the so-called analyst. Okay, uh, but as per the SEBI guidelines, okay, this is the disclaimer I am supposed to give, so I am giving you. Okay, now what we are telling you yesterday, we told you yesterday, है ना, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप, ओके, इफ यू आर ट्राइंग टू टेक पोजीशन, ओके, ऑन इन क्रूड, ऑलराइट, सो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्रूड को और आप पुट बाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसने 31 EMA के नीचे, है ना, as 31 EMA is below 113, it's very strongly negative, and then it is a red candle has been created on daily charts. Okay, तो यहाँ से मार्केट is supposed to fall. कहाँ तक गिरेगा? प्रोबेबिलिटी यहाँ तक गिरेगा $55। So it's a very risk reward ratio is very high. Okay, आपका रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे होगा? ये $62 फॉर मी। अगर 60.53 $60.53 नहीं, $62 अगर आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, टू पुट अ स्टॉप लॉस $1.5 अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइस इज राइट नाउ इज $60.5 एंड आपका स्टॉप लॉस बनता है $62। अगर $1.5 अगर आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, सो यू गो टू 30 minutes चार्ट। Yes, go to 30 minutes chart, okay, and put your stop loss 60, वहां पे $62 बन रहा था, यहाँ पे $61.30 और $61.10। ओके, 10 पिप ऊपर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्राइस नेगेटिव ऊपर गया, रजिस्ट किया एंड देन वहां से फॉल कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था यस्टरडे। ये आज का मूवमेंट है ना। फिर आके थोड़ा ऊपर
उसने रिट्रेस किया हुआ था एंड वहां से फिर गिर रहा है. ओके, सो दैट वाज सपोज टू हैपन बिकॉज क्रूड इज वेरी मच नेगेटिव एट दिस मोमेंट. ऑलराइट. एंड क्रूड में आप सिर्फ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दे के ही ट्रेड कर सकते हैं. इससे हाईली स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट. ओके. इस ऐसा भी हुआ है, आपने देखा होगा प्रीवियस इंसिडेंट में कि क्रूड का भाव है ना -$5 तक चल गया था ना. कोई इंस्ट्रूमेंट का प्राइस माइनस में जा सकता है क्या? वेदर इट्स अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट. बट इसी के लिए सारा लड़ाई चल रहा है, राइट, यू नो, इंटरनेशनली, है ना. एंड दिस इज द बेसिस ऑफ all the instrument, you know, all the, I mean, this is the basis of all the econometric calculation, है ना. क्योंकि अगर क्रूड प्राइस बढ़ता है तो आपके, यू नो, इन्फ्लेशन बढ़ता है. क्रूड बढ़ता है तो, यू नो, एवरीथिंग. ओके, द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन राइज. ओके, इन्फ्लेशन इज इन प्लेस. सो क्रूड एंड इसकी वजह से कंट्रीज इज फाइटिंग विथ ईच अदर, है ना. सो इट्स वेरी हाईली स्पेकुलेटिव बाय नेचर. तो अगर आप इसको ट्रेड करते हो, ओके, इट्स हाईली वॉलेटाइल. सो अगर आप, इफ यू आर स्मार्ट ट्रेडर, आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो इसमें से बहुत पैसा कमा सकते हैं, राइट. अगर इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड द वे आप दूसरा कुछ ट्रेड करते हैं तो उसके लिए टफ है ना. क्योंकि आपको स्टॉप लॉस दे के ही काम करना पड़ेगा, यू नो, क्रूड जैसे इंस्ट्रूमेंट में. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर. ओके, ये क्रूड में हमने कल बात किया था, ऑलरेडी डिस्कस किया था. सिल्वर में भी बात किया था. नाउ हम लोग यूरो यूएसडी में भी, है ना, चर्चा करेंगे. ओहो, आ गया नीचे, राइट. देखिए यहाँ पे इसे नेगेटिव कैंडल थोड़ा ऊपर गया. रेजिस्ट कहाँ पे किया? 31 AM में रेजिस्ट किया डेली में. और 30 मिनट्स में, देखिए 30 मिनट्स में इसने 113 में रजिस्टर करके दिन इज नाउ इज फॉलिंग. ओके. आप यहाँ पे अगर ये 30 मिनट्स को होने दीजिए, 7:15 हुआ है ना इवनिंग में अभी, इसको 15 मिनट होने दीजिए आप. ओके. ये ट्रेडिंग व्यू में तो ये 30 मिनट्स का कैंडल बन जाने दीजिए. उसके बाद आप दोबारा पोजीशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पुटिंग अ स्टॉप लॉस ऑन आइदर 31 और 113. दैट मीन्स $61 और $61.5. ऑलराइट. 10 पिप्स ऊपर लगा लीजिएगा, है ना. क्योंकि वॉलेटिलिटी में शायद 10 पिप्स ऊपर जाए, लेकिन जाना, है ना, नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाए तो. ऑलराइट. ओके. डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग हुआ है. वी कैन ऑल्सो चेक द डॉलर index. All right. And nearly 1% is down. Crude कल से, okay, 0.85%, nearly 1% is down. Okay. तो देखते हैं, यू नो, आपको पता ही होगा कि कैसे, यू नो, स्टॉप लॉस को ट्रेड किया जाता है. सो प्लीज डू दैट. ओके. एंड इन सिल्वर, ऑलराइट, सिल्वर में बात कर लेते हैं. इसको आने देते हैं. अभी 0.92% हो गया. ओके. मतलब नेगेटिव 57 सेंट्स डाउन है. ओके. तो उसको मूव करने दीजिए विद स्टॉप लॉस, एंड हम लोग थोड़ा लेट्स डिस्कस सिल्वर. सिल्वर क्या बोल रहा है? ऑलराइट. देख लेते हैं सिल्वर. सिल्वर में क्या है? व्हाट इज सिल्वर? सिल्वर इज मूव बाय मून, एंड इज यू नो, इट इज आल्सो हाईली volatile instrument by nature. बट आज का इंपॉर्टेंस क्या है इन सिल्वर? लेट्स फाइंड. दिस इज द सिल्वर. हमने इसमें इसको डिग्री भी यूज किया हुआ है. ओके. हाई लो एंड डिग्री करो. व्हाट इज द डिग्री मीन्स? डिग्री मीन्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट से डिग्री ड्रॉ किया जाता है. ओके.
इसको कहा जाता है ज्ञान फैन, पर ज्ञान बाबा ने हमारे यहाँ से ये सब चोरी करके अपना इंस्ट्रूमेंट बना दिया. दैट इज द नेचर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. Forget about it, and they think they are smarter than us. Okay, see, in our ancestral time, since our ancestral time, everybody used to measure everything in degrees. So ज्ञान बाबा यहाँ पे आके हमारे हिमालय में रह के the same instrument, same thing he has drawn and with his calculation. जैसे स्क्वायर ऑफ नाइन. ओके, स्क्वायर ऑफ नाइन भी वो अपने नाम पे पेटेंट करके रखा है. इट्स लाइक अगर स्क्वायर ऑफ नाइन के बारे में कैलकुलेशन, अगर आप लोगों को पता होगा स्क्वायर ऑफ नाइन का कैलकुलेशन कैसे होता है. ओके, उन्होंने भी ऐसा लगता है कि ये ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट है, ज्ञान का टूल है. एब्सोल्युटली नॉट. ओके, ये नाइन का कैलकुलेशन इज बिन हैपनिंग इन इंडिया. have been we have been doing it for quite a long time, since thousands of years. So forget about it. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, we are trying to measure the degree of that particular number. Okay, गैन फैन का नियम ऐसा होता है. व्हाई वी आर यूजिंग इट, गैन फैन का नंबर होता है द टॉप एंड बॉटम, जो हमने डिस्कस किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, आई मीन ड्रॉ किया हुआ है, वो हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिग्री मेजर किया है. ऑलराइट, नाउ 45 डिग्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर ना. 45 डिग्री. नाउ एक 45 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा होता है कंजंक्शन, डिग्रिकल कंजंक्शन. नाउ एक ऊपर से आपने देखोगे कि डाउनवर्ड जो एंगल ड्रॉ किया गया है, सेम थिंग, सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज टेकन रेजिस्टेंस ऑन दिस पर्टिकुलर डिग्रीज, राइट. यही है, नथिंग मोर देन दैट. ओके, यू जस्ट हैव टू एंड सी प्राइस मूव्स इन डिग्रीज फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर. ओके, अगर नीचे की तरफ भी आएगा, प्राइस मूव्स इन डिग्री, अगर एक डिग्री को कवर करेगा देन इट विल ट्राई टू रीच टू द नेक्स्ट डिग्री. अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इज सेम, प्राइस इज सपोज टू गो फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर. नाउ सिल्वर के बारे में यस्टरडे को जो हमने डिस्कस किया था, सी सिल्वर yesterday had created a strong green candle, right? ये जो नेगेटिव उसके प्रीवियस जगह 28 मई का जो कैंडल था, ओके, 29 में ये स्टार्ट ने क्या किया, इस कैंडल को एनगल्फ किया, राइट. So it's we call it engulfing bullish candle, right? Now this engulfing bullish candle, what's the nature we have? This is the pricing movement that we are discussing. We are not discussing about the time yet. हम लोग time के बारे में अभी discuss नहीं कर रहे हैं, right? We are only discussing about the pricing part, okay? The degree कैसे प्राइस मूव करता है, हाउ द बाइंग बिहेवियर को जज किया जाता है, एंड वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे समय से यूजिंग द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आज का मूवमेंट क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए, प्राइस इज फॉलिंग, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ था, प्राइस इज फॉलिंग टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डिग्री, राइट. 2/1 में ऊपर से नीचे आकर सपोर्ट ले रहा है. ओके, ना अगर ऊपर से नीचे आके सपोर्ट ले रहा है बंदा, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पॉजिटिव कैंडल, हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड ले सकते हैं. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी ट्रेड. हाँ, बट स्टिल ना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पोजीशन लियो. ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैसे पोजीशन ले सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग पर्पस, राइट. And if you're watching this site, then please, subscribe and, whatsoever. आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, so you will be able to get this, information regularly. Generally, I don't talk about the subscription. I'm not going to talk about it later on also. My objective is to teach you, right? From the Gurukul, our objective is to teach you the way we see the market, all right? And actually, I can guarantee and assure you that the way Gurukul sees the market, it will, it will make you upside down, okay? आपको नया दिशा मिलेगा. You will see the things in a new way, okay? What's saying? Let's talk about this degree. अगर इस डिग्री को नाउ हम लोग देख रहे हैं, आफ्टर क्रिएटिंग दिस ग्रीन कैंडल, ये बंदा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ओके, दिल्ली में ये बंदा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है. अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, इसके नीचे क्लोज नहीं देता, ऑलराइट,
अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो देन द प्राइस विल ट्राई टू रीच टू द नेक्स्ट डिग्री, दैट इज 32.45 डॉलर. ओके, लेकिन it's a high probability that it's going to take a support over here, और support the another strong support zone बनता है जो प्रीवियस डे का लो बना हुआ है. नाउ अगर आप मुझे पूछोगे शुड यू टेक द पोजीशन इन इन सिल्वर राइट नाउ, आई माइट से ओके एब्सोल्युटली यस. बट व्हाई इज यस? बिकॉज नाउ अभी हम लोग कहाँ पे हैं? इफ यू स्टडी एंड कैलकुलेट द टाइम साइकिल, ओके, अभी हम लोग न्यू मून साइकिल में, राइट? तो न्यू मून साइकिल में क्या होता है, प्राइस जनरली प्रेशर रहता है, ओके, एंड डाउनवर्ड स्लोप है. सो दैट्स व्हाई यू सी फ्रॉम द 3-4 days. Okay, since the new moon, it has, out of 4 days, it has, 3 days, it has created a red can. Okay, क्योंकि ये 15 दिन का साइकिल होता है न्यू मून का, एंड न्यू मून साइकिल 15 डेज में भी आपका और 3 साइकिल होता है. व्हाट्स एवर, अभी हम लोग यहाँ पे पोजीशन बाई के लिए ले सकते हैं क्या? एब्सोल्यूट ले सकते हैं, बेस्ड ऑन 90 डेज, 90 डेज का पोजीशन आप लीजिए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में. क्यों? क्योंकि अभी अगर इंटरडे में अगर क्योंकि एज इससे न्यू मून साइकिल थोड़ा नीचे आएगा तो यू कैन एक्यूमुलेट मोर. ओके, क्योंकि 7-8 तारीख से आपका सिल्वर का साइकिल पॉजिटिव की तरह ही बन रहा है, जो हमने कल यस्टरडे को ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 7-8 तारीख से हर कमोडिटी सिल्वर, कॉपर का साइकिल पॉजिटिव ही बन रहा है. आई मीन द साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम दियर द पॉजिटिव साइकिल. ओके, नाउ वन थिंग जो मुझे आपको बताना चाहिए, ये अभी अभी भी ये पॉजिटिव साइकिल में ही है. सो दैट्स व्हाई वन पॉजिटिव साइकिल, क्यों पॉजिटिव साइकिल में है? क्योंकि मार्केट इज कम्बस्ट इज नेगेटिव फॉर द स्टॉक मार्केट, नॉट क्रूड. ऑलराइट, नाउ और उसके बाद मार्स आ रहा है. तो इफ यू गो विद एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल, हाउ इज गोइंग टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमेट्रिक मॉडल. ओके, यू सी डोनाल्ड ट्रम्प आज कुछ बोल रहा है. हम लोगों को क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज रूलिंग द मार्केट? यस, ट्रू, ही इज द किंग, राइट, किंग ऑफ द वर्ल्ड. बट उसके बाद भी हम लोगों को टाइम डिटरमाइन करता है कि हाउ द आवर किंग इज गोइंग टू बिहेव. अगर अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे, यू विल नो कि राजा कैसे बिहेव करते हैं. ओके, मैं बाद में इन आवर लेटर डे सेशंस आई विल ब्रिंग ऑल दोस बुक्स. ओके, तो मैं विद द श्लोकस एंड एंड रेफरेंसेस विल टॉक कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में ऐसे गवर्नमेंट क्यों बिहेव करता है एंड ऑल. विल आल्सो टॉक कि कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हाउ इकोनॉमेट्रिक सिचुएशन चेंज होता है. ओके, अगर ये आपको पता होगा ना, यू विल ऑटोमेटिकली नो हाउ दिस मार्केट इज गोइंग टू बिहेव. दिस these financial instruments are the direct and reflection of the economy that has been happening behind you. All right, it's not a gambling instrument, that we know, right? It's a reflection of our economy, right, and world economy. Okay, so we need to understand those things in very in ourselves. Okay, talking about a company and uska data wo to rehta hi hai. Everybody knows that, right? Whatever information you have on public platform, okay, like this information, if you go with this information, the econometric calendar, so these are the information are having on a public platform, so everybody knows it, right? So what the extra edge you have, what edge you have over the others. अच्छा, आज इंडिया का जीडीपी क्वार्टरली डेटा आया है 7.4%. ओके, दैट्स वंडरफुल. एंड फोरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, दैट्स वंडरफुल. बैंक लोन ग्रोथ थोड़ा कम हुआ. ओके, एंड डिपॉजिट ग्रोथ भी सेम है. बैंक लोन ग्रोथ मार्जिनली कम हुआ है. ऑलराइट, एंड ये 6:30 बजे का रिपोर्ट है ना, तो आई एम ऑल्सो वाचिंग लुकिंग एट इट फर्स्ट टाइम. ऑलराइट, एंड जीडीपी एनुअल 6.5% आया है अगेंस्ट 8.2%.
Okay, but GDP quarterly, last quarter में it was 6.4%, was expected 6.7%. हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा GDP का डेटा आया है, right? So market might behave accordingly next week. Okay. अच्छा, फेडरल फिस्कल डेफिसिट मार्च में डेफिसिट भी बहुत ज्यादा बढ़ के आया है ना? फिस्कल डेफिसिट, ओके, यू नो ना, फिस्कल डेफिसिट, ओके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो डिविएशन होता है, ऑलराइट? Now, actually, it's an important thing. Okay, too many things. Too many people is going to come with too many news. In this weekend. Okay, based on this GDP quarterly data, because it's a good one. Whatsoever, ये जो डेटा जो होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ओके, ना पब्लिक प्लेटफॉर्म का डेटा तो इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी. पब्लिक प्लेटफॉर्म का डेटा तो इज बीन अवेलेबल टू एवरीबॉडी, राइट? सो how you are going to get an edge over the others? What's the difference? What's the you know advantage you have? What आपके पास ज्यादा क्या है जो दूसरे के पास नहीं है? Alright? Then only you are going to. वो डिफरेंशिएशन क्या है? What makes you better than others? वो तो डिसाइड करना पड़ेगा. सब लोगों ने बाय किया, आप भी बाय किया, तो मार्केट ऊपर जाएगा. बट हाउ? it doesn't work that way. Okay. You have to see, you being a businessman, if you are trading or investing, right? You are a businessman, right? So being a trader or investor, you must know, okay, you must know something that others do not know, right? Then that, and if you see the things, the way that other do not see gives you an extra edge over the others, okay? So how you can be, build it up, how you can make it up. Okay, definitely, obviously, with the studies, with more information and knowing something better. Okay, and that this objective of the Gurukul is here just to give you those edge over the others. All right, everybody is giving you the typical price axis and all, so they don't have any understanding about the other thing, but they are good. Huh? Nobody is bad over here. Every teacher is respected, whether it's good or bad. Nobody, those information is also being useful for somebody, right? Who doesn't know anything, okay? Maybe for the beginners. It's been required for them, right? Somebody even watching them for the entertainment, all right? This is also good, right? What's it? Well, let's learn something more. Okay, let's see the things in different way. Now, क्रूड और भी टूट गया. ओके, और भी 20 सेंट ज्यादा टूट गया. अभी क्रूड इज -1.5%. सो हम लोग बात करते करते ही इसने 0.5 डॉलर का, ओके, हाफ एन डॉलर का मुंह पे नीचे की तरफ दे दिया है इस टाइम फ्रेम में, आधे घंटे में. व्हाट्स वेव अप? सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आपको बाहर मिलता है. ओके, ये तो सबके लिए अवेलेबल है. वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, राइट? समथिंग न्यू. This is what, that's why you open this calendar, okay? तो आपको ये तो जानना है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा जानना. Okay, now see, ये कहाँ पे है? Silver is also falling. It is breaking down this 2.1 degree. Okay, now अगर ये break down करता है तो आपका stop loss hit होगी. If you have purchased instrument, all right, wait on. आपका यू नो आप वेट कीजिए एकदम 0.10 पिप्स का, मतलब सेंट्स का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे. आप स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन यू विल वेट फॉर योर नेक्स्ट ट्रेड. ओके, यहाँ पे देखिए, जस्ट होल्ड ऑन, एंड लेट्स सी द क्रूड इज मूविंग. ऑलराइट, हमने क्रूड जहाँ पे शुरू किया था यहाँ से, ओके, क्रूड $60 से 61 डॉलर से $60.19 आ गया. सी, यहाँ पे हम लोगों को 1.1% का नेगेटिव मूवमेंट हो गया, राइट? 0.1 के आसपास हो जाएगा, डोंट वरी. ये नीचे की तरफ और भी आ जाएगा. ओके, डोंट वरी, लेट्स वेट.
अच्छा, जो हम लोग सिल्वर के लिए बात कर रहे थे, राइट? हम सिल्वर का अगर हम लोग 3 महीने का पोजीशन लेते हैं, नाउ लेट्स गो बैक टू द सिल्वर का। सिल्वर का अगर हम लोग पोजीशन लेते हैं, क्यों 90 डेज के लिए पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं? अभी हमने बात किया कि ये नेगेटिव साइकिल में अभी हम लोग हैं, राइट? We are in a negative moon cycle, all right? The moon's market was supposed to fall. अगर फॉल करता है तो 7 तारीख से हमारे पास द मार्केट इज गोइंग सपोज टू गो अप। तो 7 तारीख से इफ मार्केट इज गोइंग टू गो अप, तो हम लोग क्या करेंगे? 30 से लेके 7 तक विल ओनली अक्यूमुलेट। जितना नीचे आएगा इट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू accumulate मोर। कैसे accumulate करेंगे? नाउ वी विल accumulate इन ऑल द सपोर्ट जोन। दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। कल यहाँ पे बॉटम बना के ऊपर गया था, सो ऑटोमेटिकली इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ पे करेंगे, फिर हम लोग ए वाले डिग्री में करेंगे, बिकॉज एक डिग्री को टूटता है तो इट कम्स टू द नेक्स्ट डिग्री। ओके, एंड इसके नीचे आएगा तो विल अगेन इट्स अनदर सपोर्ट जोन, राइट? तो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस बॉक्स को, इसको भी गैंग बॉक्स कहा जाता है, राइट? इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को? लेट्स सी। समझ में आया हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव? सी, यहाँ पे फिर सपोर्ट ले रहा है, ओके? सो वी नीड टू सी, वी नीड टू वेट एंड वॉच। यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर। All right. Now let's see what happened in Euro USD. हमने क्रूड देख लिया, सिल्वर देख लिया, now let's see what's going to happen in Euro USD. See, this is the Euro USD chart. Okay, it's very interesting. It's very interesting to trade in Euro USD. Okay. Now see, same is with Euro USD. All right. Same is with it. Yesterday, it has created a strong green candle, है ना? A strong green candle. Market के ऊपर से नीचे आया था. It trying to be a negative candle, but this negative candle converted into a green candle. So it is a very strong candle for me. Okay? अगर हम लोग आज इंट्राडे के लिए इसके ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, what we are supposed to do? अगर मैं अभी इसको लेके जाऊंगा 30 मिनट्स की चार्ट पे, ओके? नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? अगर 30 मिनट्स में जाएंगे ना, आर वी गोना बाय, इंटरडे की बात करते हैं, आर वी गोना बाय टुडे? आर वी गोना बाय टुडे or right now? Absolutely not. We are not gonna buy it right now. When we are gonna buy? When this green candle will be above 113 and 31. When 31 is above 113, right? Then only we are gonna buy it. है ना? सो अगर हम लोग तब बाई करते हैं तो देन ओनली वी विल सी द मूवमेंट। अदरवाइज व्हाट वी शुड डू, दिस इज द मोमेंटम थ्योरम। ओके, मोमेंटम लेकर हम बाई करते हैं। पर सेम थिंग अगर हम लोग कॉन्ट्रा बाई करते हैं, मतलब मार्केट गिर रहा है एंड हम लोग उसके ऑपोजिट में पोजीशन बना रहे हैं, कॉन्ट्रा बाई करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? विल टेक द पोजीशन हियर ऑन डेली चार्ट ऑन 31 EMA at 1.25 1.12529, है ना, डॉलर में हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। ऑलराइट। सो मोमेंटम में हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये मोमेंटम है, दिस इट हैज क्रिएटेड अ ग्रेट कैंडल। अगर इस मोमेंटम को हमको कैरी करना है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 30 मिनट्स में इसके ऊपर, ये अभी जैसे 30 मिनट्स के नीचे है, हम लोग एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनने देंगे एंड विल पुट अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द 31 और 113 में यहाँ पे। ओके, जैसे एज पर द प्रिंसिपल एंड सिद्धांतम, ये नीचे से बैठ के ये ऊपर गया था बट वहां से नीचे आ रहा है। ओके, ये गया था, हम लोग यहाँ पे पोजीशन ले सकते थे, अगर पोजीशन लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता 31 EMA एंड 113 बोथ में। ओके,
एंड यहाँ पे आप देखिए एक ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन तो देखिए इस ब्रेकडाउन से लेके यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, ये देखिए। आप अगर ऐसे हाई एंड लो को कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट नंबर, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सपोर्ट लिया हुआ है व्हाट्सएवर। ओके, ये नीचे से ही ये ब्रेकडाउन, हम लोग जो ब्रेकडाउन बोलते हैं ना, ये ब्रेकडाउन कैलकुलेशन कैन बी हैपनिंग ऑन एनी टाइम फ्रेम व्हाट्सएवर। नाउ लेट्स, ये भी 144 समेशन थ्योरी से आया हुआ है व्हाट्सएवर। नाउ यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नाउ कैन वी बाय इट? एब्सोल्युटली कैन बाय इट, वी आर गोइंग टू बाय इट above 1.13411, and if it is a green candle, then all right, so let the price go above this, all right, or let the price fall more at कहाँ पे ना, at 31 EMA पे। ये 31 EMA पे आई विल लेट फॉल टिल 1.1256 पे। ओके, आइदर तो ये हो गया मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड, और मोमेंटम ट्रेड में आई विल गो एंड बाय आवर 30। ऑलराइट, साउंड्स गुड। तो हम लोग उसके लिए अभी वेट करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ दिस यूरो यूएसडी इज गोइंग टू बिहेव एंड हाउ दिस क्रूड ऑयल इज गोइंग टू बिहेव। ओके, तो हम लोग वेट करते हैं 7 से लेकर 7:40। ओके, 40 मिनट से हम लोग एक ही आई मीन बात कर रहे हैं। अभी हम लोग मार्केट को मूव करने देते हैं। ओके, एंड क्रूड के लिए हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? सेम ही यहाँ पे $61। ओके, और ये कॉपर, कॉपर का भी सेम। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द commodities are having the same side. Okay, uh, but sometimes the silver cycle and the copper cycle are different, all right, and crude cycle are different. Okay, we'll discuss and then we'll take trades accordingly. 7 दिन रुके रहिए. Okay, and making 100% from market in less than 90 days is not a big deal. Okay, the most important thing in this market is to have patience. So have patience. और मेकिंग 100%, अगर आप हर 90 डेज में भी 100% करके बनाते हैं, तो नाउ यू सी कि 6 महीने में आपका, 1 साल में आपका कैपिटल कहाँ पे हो सकता है। ऑलराइट, बट द प्रॉब्लम विथ अस इज दैट वी आर आइदर वेरी ग्रीडी और पेशेंसलेस। ओके, and we are not professional enough, okay, to deal with intellectually. All right, mostly whatever we do it emotionally. That's the most important. Okay, I mean that's the which helps you to wipe out your capital. So have patience. Patience is very important. It's not that you have to trade every day. Trade whenever it's been required. Okay, you must wait 5 days, 6 days, and then after 5 days, whenever you are taking a trade, you can make 50% from a single trade. Even from a single trade, we have made 160%, right? In 90 days, we have made like you know a lot of money. Okay, with the professional trader, we trade with sometimes with 1 lakh quantities, sometimes with 50,000, 40,000 quantities. Right now, even in stock market, the quantities we are holding is more than 40,000, right? So I mean, being a professional trader, these things are different. Okay, you need to see the market in a different way. All right, you buy, you hold, and for a major time period, and put it in time. आप अपनी पोजीशन लीजिए, स्टडी कीजिए, डायरेक्शन समझिए, एंड अपने पोजीशन को उस डायरेक्शन में मूव करने दीजिए। ऑलराइट, so it requires lots of patience that we need to accumulate. Okay, whatsoever for the patience, you can do it in yoga, some meditations, so that helps you a lot. Okay, but here we are just going to wait. See, if we go with the silver right now, see, silver has taken a support
on that particular degree just we were discuss. जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिल्वर के लिए, देखिए यहाँ पे सिल्वर ने सपोर्ट लिया ना, देखिए ऊपर जा रहा है, हमने बताया था। ओके, सीएल देखिए। ओके, सो डिग्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लो। डिग्री प्लेज देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल है हाउ दिस मार्केट बिहेव। ओके, देखिए कैसे हाउ ब्यूटीफुली सिल्वर हैज टेकन सपोर्ट ऑन दिस डिग्री, है ना, एंड इट वाज अ ग्रीन कैंडल। आप यहाँ पे बाय करके नाउ लेट इट वेट, इसको भी आप 30 मिनट्स में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 30 मिनट्स नहीं लगाया हुआ है, बट आई कैन यूज इट। वेट ऑन, है इसको 30 मिनट्स में लेके जा रहे हैं। ओके, तो इसको भी सिल्वर को भी बाय करने के लिए अभी आप सिल्वर को बाय नहीं कर सकते बिकॉज 31 ईएमए इज बिलो 113। सो वेट, वेट, नो, लेट्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, बट एज द ईएमए वाज बिलो, ओके, तो ये फिर से यहाँ पे रिट्रेस कर गया। ओके, दिस इज द रीजन which we must have to understand. So wait on, let this 31 go above 113, and उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगा, you can take position putting a stop loss. Okay, इसमें आप देखेंगे आपका सक्सेस रेशियो is going to be more than 8, 8 out of 10 times. Yeah, 7 8 out of 10 times, so you are going to get a profitable trade. Okay, है ना, तो व्हिप्स तो बहुत कम मिलेगा। अगर आप समय को भी इसके साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो व्हिप्स तो बहुत कम मिलेगा। बट इसका ये जो सिद्धांत है व्हाट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग, इसका सक्सेस शो 7 और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है। ऑलराइट, सो हम लोग वेट करते हैं इसके लिए। हम लोग सिल्वर, क्रूड एंड यूरो यूएसडी के लिए वेट करते हैं कि लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू गिव यू मूवमेंट। ऑलराइट,
Okay. And by the way, if you have any questions and if you want to ask me anything, okay, regarding okay, if you have any questions and if you want to ask me any questions, you can ask me, okay, in the chat box. All right. I'll definitely try my level best to answer it. All right. Mhm. Now हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, ओके, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है. ओके, क्रूड में हम लोग क्या कर सकते हैं ना. ओके, क्रूड में हम लोग क्या कर सकते हैं ना. क्रूड में अभी देखिए, क्रूड ऊपर गया. देखिए हाउ 31 प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. राइट. अगर आप और भी छोटा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हो ना, ये 5 मिनट का कैंडल में भी आप काम कर सकते हो. दिस कैन बी अ न्यू एंट्री. ओके, 5 मिनट खत्म होने दीजिए. रेट
एज 31 इज बिलो 113, इसके नीचे आप पोजीशन बाय करके, ओके, मतलब पुट बाय करो या सेल करो, आ, करके आप इसको ऊपर इसका 60.75 को स्टॉप लॉस लगा के यू कैन सेल इट वंस अगेन. सेम इज विथ सिल्वर. ओके, same is with silver, but don't sell silver right now. Silver has created a strong candle. Okay, so silver में वैसा नहीं है. silver में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, but crude में आप कर सकते हो. Okay, 1% का मूवमेंट नीचे की तरफ हो गया है सिल्वर में, ये सॉरी क्रूड में. यस, देखिए सिल्वर में भी आप, दिस इज क्रूड राइट, राइट नाउ वी आर शेयरिंग क्रूड. से क्रूड में भी यहाँ पे आप सेल करके आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट, 30 सेंट्स ऊपर 5 मिनट की चार्ट में. नाउ बट आप सिल्वर में देखिए, hang on with silver, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस. सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में क्या है, जस्ट वेट वेट ऑन, दिस इज सिल्वर, राइट. See, silver में भी it has created red candle, right? And it is creating resistance over here, है ना? So आप यहाँ पे सिल्वर को भी सेल करके इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड, वेरी शॉर्ट ट्रेड. ओके, आप करके यहाँ पे आप, है ना, स्टॉप लॉस लगा सकते हो. ऑलराइट. देखिए सिल्वर भी इज फॉलिंग. ओके, वेट ऑन, it can retest the low 32. Oh, oh, silver is falling. Okay, see, falling, taking a resistance, है ना. Crude अभी holding. Okay, don't worry, crude will fall too. The candle it has created, crude will fall too. Same is with Euro USD. Okay,
just short term, very short term period में everybody is negative, okay? Because देखिए यहाँ पे सी here also इसको आप रेड कैंडल बनने दीजिए. सी these are the techniques that can be used anywhere. आप यहाँ पे रेड कैंडल बनने दीजिए, ओके, क्लोज होने दीजिए 5 minutes का. That means 2 बजे. Then you can take position putting a stop loss just above it. All right. Same is with silver. Just see. This is the silver candle right now. Silver candle right now. All right. Silver candle right now. 1 5 minutes. It's falling. Wonderful. Wonderful. Falling more. Wonderful. आपका देखना पड़ेगा M6 में कितना हो रहा है. Wonderful. See, wait. See, you need not to learn everything. Okay. See, falling more. See, only a couple of strategies can really make you rich from the market. Okay, can help you to earn a lot. All right, but need to be a little bit of discipline. So always put commodity or currency, put a strict stop loss. It's very important for the commodity and currency. Unless you are playing for like 30 days, 40 days, or 90 days, and with a very strict money management rule. Whenever we take positions on a longer term period, we uh, put our money in ratios. Okay, you need to learn the ratio analysis. No, we just take the position. If you have if you have like smaller capital, if you are a retail trader, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए एंड यू टेक योर पोजीशन एट 1:1:1 में. ऑलराइट. और 1:2:4 में. ओके. और 1:1:2 में. Alright, based on the time cycle and the degrees you are having with your instrument. Based on that's very important. What time cycle you are having, Samne, based on that. All right, and this is the this is when you are not putting stop loss. But again, I'm telling you, whenever you are trading commodity currency or BTC, you must use a strict stop loss. All right, it's a mathematics, okay? And with this mathematics, you are trying to understand the psychology of the people. Market is nothing more than psychology, right? See, now silver is again falling back, okay? Now silver, let me check silver, all right. See, silver option price, P it is giving a 3% downfall, okay? 115 point, 115 points minus a 98,000 PE का, okay? 98,000 P, no, it is on November contract. ये जून वाला बता रहा हूँ. जून वाले में already you are having 10% profit. Okay? See, silver जून 98,000 P, 2,700 का 232 रुपया पॉजिटिव है, 10%, 9.40%. This is what we are talking about. All right? This is the way you can trade. You know? Oh, wonderful. See the silver. Only what we can see and understand out of this. And again, with the Euro USD too. See, the same is with Euro USD. See the Euro USD, okay? Falling. All right. After this red candle, it's falling too. What happened? Okay, crude is going up, taking resistance over here. Okay. Stick stop loss, or we'll enter once again. So let's see. This is Euro USD. Okay, it is falling too. And same is with silver.
Same is with silver. A wonderful movement. Now the silver June contract, now it has become 321 point. Okay, now it's giving 14% profit. Okay, 14% in today's single trade. Silver, 90. No, sorry, 308 per 308 point. Okay, 12.5%. Wait on. You will be getting registered on 31. What do you have in the calendar? Okay, now taking support over here in the bottom. All right. Now, whether this bottom is gonna break or not, we have to check it from 15 minutes and 30 minutes and a 1 hour. Let's check. What do we have? Okay, this is 15 minutes volume. Okay, 30 minutes. Okay, let's see. Let's 30 minutes to be completed. Okay, at 8:30. So let's wait till then. All right. What is happening? What do you see in 30 minutes? All right. What we see on 30 minutes that it has created a red candle, a strong red candle downside with a very good volume, right? With a very good volume. So that shows negativity. I mean, it says that we must sell it, putting a stop loss over here. This is on silver, okay? And then it, returns back, taking a resistance at 31, okay? We can sell it, then it's falling back once again and taking support at the bottom, right? This is what happened. Okay, it is taking a double bottom type. It's going to create. Let's see, whether this bottom is going to break it or not. We need to wait till 8:15. Okay, when this 30 minutes
candle going to complete, all right? Let's see what happened on 1 hour. Okay, we must, seeing this 1 hour candle, we must and definitely sell silver at this moment on a very shorter period of time. See the strong red candle happened. Okay, it's an engulfing bearish. All right, it was a hammer, but the entire hammer is a very strong candle. Okay, but this strong candle got engulfed with a negative candle. Wonderful. Okay, this it gives us a sell signal, putting a stop loss on just above this red candle, all right? Okay, on 1 hour, your stop loss should be just above this red candle, and if you are selling it, see it went up on the next hour, okay, taking a resistance at 31 and then falling back once again. It's a high probability trade that it is definitely going to break down, okay? It is definitely going to break down. It's a very high probability trade. What we see over here, this is the lower side of the channel. This is the lower side of the channel. All right. And this is the higher side of the channel. If you go with this channel calculation, then see, this is the lower side of the channel. Okay. Uh, if you go with the channel calculation, then you must buy on the lower side of the channel and sell on the higher side of the channel. All right. But But here, based on this candle, last 1 hour candle, we can say that it is negative and it is going to be negative. And see, this is why that's why the market is behaving in that way. This is why the next hourly candle tried to went up, taking resistance of 31 and then again falling back. All right. So it is negative on a very short period of time as we are passing through a negative moon candle, right? Sorry, negative moon cycle. Okay, we had a new moon cycle, which is negative. See, it's falling back. It's broken down. Okay, now 1 hour, which is showing very negative. Right now, let's get back to 5 minutes chart once again, or 30 minutes chart. Okay, in 4 minutes, 30 minutes is going to be completed. See, it's the lower channel is, it has broken down. Now, let's go to the 15 minutes. See, it's broken down. All right, it's broken down. Wonderful. It's falling back. Now, let's go to the 5 minutes. 5 minutes, okay? See, it's falling, it's broken down, right? Now, let's see how far it can come, okay? Where you should book your profit, okay? Where you should book your profit. You should book your profit. Either you can trade your stop loss or book your profit. Or book your profit over here. See, it is taking support and the angle, okay? On daily. This is the daily angle, okay? That we are talking about. Let's see what we have on daily. No, डेली में तो कैंडल ब्रेकडाउन है ओके एंगुलर ब्रेकडाउन है ओके उस एंगल के नीचे आ गया है ऑलराइट सो यस वी मस्ट wait on a very shorter period of time. Okay, short-term trading decision में what you are supposed to do, you wait and see if 1.21.26% is going to grow. Break down or not. If it is going to break down, price is supposed to come at 32.65. Now it's 32.8. It's on a very smaller, smaller time frame. Okay? On a very small time frame we are working. But it has broken down. Let's see if it is okay. Coming here or not. Daily May, it has broken down the angle. Okay? And let's see how it's going to behave now. Wonderful. I'm happy. I'm happy to see these things, all right?
It's interesting. Okay. Now, if we talk about crude, let's क्विक को थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, alright? क्विक को थोड़ा ऊपर जाने दीजिए एंड यहाँ पे आने दीजिए. इससे बुलिश कैंडल ना 1 hour में this is a very bullish candle. These two were negative candle, right? And after that, this doji, okay, is a bullish candle. So that's why it's going up. कहाँ तक जा सकता है? The probability of reaching at 61.09 or 61.40. Okay, so वहां पे आने दीजिए and then you can take your next positions. All right. Now let's go back to 30 minutes. Yes. 5 minutes. Okay. Now again, you can take your position. You can take your position, but ये थोड़ा रिस्की होगा. आप यहाँ पे ये जैसे रेड कैंडल बना है, you can take your sell position once again, putting a stop loss just above this candle. Okay? अगर ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ तक जाने की संभावनाएं है. तो यहाँ पे जाते जाते you can take your second positions. Okay? But यहाँ पे एक डबल bottom kind of pattern बन रहा है. See, it's falling, right? Again, it's falling. Red candle below 31, market को नीचे ही ला रहा है. Okay? That's wonderful. But put a very strict stop loss on. Okay, this is what we have. I know we gotta know what we have in nutshell. We have negativity on crude oil. We are having negativity on Euro BST. Okay, we are having negativity on silver on a very shorter period of time. Based on the support and resistance जो अभी हम लोगों ने discuss किया, based on that you take your position with a strict stop loss and I assure you you are definitely going to get an outstanding profit. You just need to do practice it regularly. All right. So we're going to leave you over here. Okay. And next, we're going to see it again on Monday at 7 o'clock. We'll discuss this, commodity currency and, Bitcoin. Today, we are not discussing Bitcoin because let me study Bitcoin in the weekend on Saturday, Sunday, and Monday onwards, I'll come up with Bitcoin and Ethereum play. Okay. Till then, bye bye. See you for now.